কি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হ'ল কংগ্ৰেছৰ আহমেদাবাদ অধিৱেশনত? কি ক'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে? কোন কংগ্ৰেছীক আগলৈ আনিবলৈ আহ্বান গৌৰৱ গগৈৰ? মঙলবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধিৱেশন বুধবাৰে অন্ত পৰে। 84 সংখ্যক এই অধিৱেশন সাবৰমতী নদীৰ পাৰৰ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল ৰাষ্ট্ৰীয় স্মাৰকত অনুষ্ঠিত হয়। অধিৱেশনত কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিলেও মূলতঃ দুটা প্ৰস্তাৱৰ কথা সংবাদমেলযোগে সদৰি কৰে দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ জয়ৰাম ৰমেশে। এই দুটা প্ৰস্তাৱ হ'ল ন্যায়পথ, সংকল্প সমৰ্পণ আৰু সংঘৰ্ষ। গুজৰাটত কংগ্ৰেছক কিয় প্ৰয়োজন? जो दो प्रस्ताव रखे गए हैं एआईसीसी सदस्यों के सामने, ये पहला प्रस्ताव है न्याय पथ, संकल्प, संघर्ष, समर्पण। एक्चुअली सीक्वेंस है संकल्प, समर्पण और संघर्ष। तो इस पर अभी चर्चा चल रही है, इसके बाद पारित होगा। और एक और जो विशेष प्रस्ताव है जिसका मूल उद्देश्य ये है गुजरात में कांग्रेस क्यों अभी कांग्रेस की जरूरत है गुजरात में, उसको लेकर एक प्रस्ताव रखा गया है एआईसीसी में। ইফালে অধিৱেশনৰ সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ 12 বজাত দিল্লীৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিতং তথ্য সদৰি কৰাৰ কথাও উল্লেখ জয়ৰাম ৰমেশৰ। আনহাতে দিনৰ 2 বজাত ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে ডাটা প্ৰটেকশ্যন আইনৰ সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব বুলিও প্ৰকাশ জয়ৰাম ৰমেশৰ। पर कल 12 बजे को दिल्ली में एआईसीसी में मैं इस सेशन के बारे में विस्तार से आपसे बातचीत करूंगा। कल ये सवाल भी कई लोगों ने किया है। कल 2 बजे को इंडिया जनबंधन की पार्टियां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पर वो विषय बहुत सीमित विषय है। वो विषय डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर। আনহাতে অধিৱেশনত লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়েও ভাষণ দিয়ে। নিজৰ ভাষণত ৰাহুল গান্ধীয়ে বিজেপি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘক সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লয়। আৰএছএছ আৰু বিজেপিয়ে সদায় সংবিধানৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি আছে। এই আক্ৰমণ কংগ্ৰেছেহে বন্ধ কৰিব পাৰিব বুলি দাবী ৰাহুল গান্ধীৰ। आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती हैं। आप देखना, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। जिस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस के सामने नहीं खड़ी हो सकती। जिस पार्टी के पास विचारधारा है वो ही आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और वो ही आरएसएस और बीजेपी को हराएगी। অধিৱেশনত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও বিজেপি চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। অধিৱেশনত লোকসভাৰ বিৰোধী উপদলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে নিজৰ ভাষণত অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। তেওঁ কয়, যদি অনাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনবোৰত আমি জয়ী হ'ব লাগে তেন্তে দলৰ নীতি আদৰ্শত অটল থকা কংগ্ৰেছক আগলৈ আনিব লাগিব। ইয়াৰ উদাহৰণ দি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকীয়ে কয়, অটল কংগ্ৰেছেই হ'ল যি আৰক্ষীৰ লাঠিৰ কোব খাইছে আৰু তাৰ পাছতো কংগ্ৰেছতে আছে। ভয় ভাবুকি খোৱাৰ পাছতো যি কংগ্ৰেছী কংগ্ৰেছত আছে তেওঁলোকক আগলৈ আনিব লাগে। कि अगर आने वाले प्रांतों में अगर हमें विधानसभा के चुनाव जीतने हैं तो हमें कट्टर कांग्रेसी को आगे लाना पड़ेगा। वो कट्टर कांग्रेसी जिसने पुलिस की लाठी खाई हो लेकिन आज भी कांग्रेस कर रहा है। वो कट्टर कांग्रेसी जिसको धमकाया गया हो, डराया गया हो,
बहुत लुभाया गया हो, लेकिन आज भी वो कांग्रेस कर रहा है। हमें उस कट्टर कांग्रेसी को आगे लेना होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम कट्टर कांग्रेसियों को आगे लेके जाएंगे तो हर विधानसभा चुनाव में, चाहे गुजरात का हो, उत्तराखंड का हो, असम का हो, केरल का हो, हर विधानसभा चुनाव में हमें फतेह ला। আহমেদাবাদত অধিৱেশন সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত এই অধিৱেশনে কংগ্ৰেছক কিমান দূৰ শক্তিশালী কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।